guys, welcome back to my channel. I hope you guys all are doing well. So in today's video I'm going to create this stunning look for New Year's Eve, and I have created this look with products under 300 rupees. Yes, you heard it right. So if you guys want to see how I create this stunning look, then please keep on watching. Alright, तो शुरू करते हैं बेस के साथ. तो बेस के लिए मैं पहला जो प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो है प्राइमर, एंड टुडे आई एम यूजिंग टू प्राइमर्स. ये जो दो प्राइमर है, दो डिफरेंट प्राइमर्स है. दिस इज़ द निविया आफ्टर शेव बाम. आई लाइक यूजिंग दिस एज अ प्राइमर in winters, and this is the Blur Perfect primer by Lakme. Now if you have large pores and deep pores, then आप ये try कर सकते हो. So the first thing I will be using this, and then I am going to use this just on the T-zone to hide my large pores. Actually काफ़ी दिन हो गया है मैं इसको use भी नहीं की हूँ. I really like this primer because it is quite hydrating and also it gives that very nice sticky feel, ताकि फाउंडेशन मतलब आफ्टर जो बेस प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छे से बैठे. एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट दिस. नाउ इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, आप दूसरे किसी प्राइमर में इन्वेस्ट कर सकते हो. इफ़ यू हैव ड्राई और नॉर्मल स्किन, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट. इट इज़ अ वेरी गुड प्राइमर. गाइज ऑल्सो देर विल बी लॉट ऑफ नॉइज़ बैकग्राउंड पे क्योंकि बच्चे अभी खेल रहे हैं. 4:30 बज रहा है. मेरा आज वो था कि मैं जल्दी बैठूँ वीडियो करने, लेकिन डॉलर का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है एंड he wanted me by his side क्योंकि मैं जब भी रूम से निकल रही थी he was following me and I was like, you know what, I have to sit with him now. He's sleeping right now with my mom and that is why I'm here. मैं वीडियो करने बैठी हूँ. Anyway, so मेरा वो प्राइमर हो गया. नेक्स्ट मैं लैक्मे का ये वाला प्राइमर यूज़ करूँगी. दिस इज़ द ब्लर परफेक्ट प्राइमर. नाउ ये वाला बड़ा साइज़ है. इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अभी दे हैव केम अप विद द स्मॉलर साइज विच रिटेल्स फॉर ₹299 और $295 समथिंग लाइक दैट. तो मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग चेक कर सकते हो. सो आई एम गोइंग टू टेक लिटिल बिट ऑफ दिस. थोड़ा सा ही लूँगी मैं, तो मैं इसको टी जोन पे ही अप्लाई करूँगी. सो एज आई सेड, ये वाला प्राइमर जिन लोगों का लार्ज पोर्स है उन लोग के लिए ही है. इफ़ यू डोंट हैव लार्ज पोर्स, आप सिर्फ निविया का आफ्टर शेव बाम एज अ प्राइमर अप्लाई कर सकते हो. सो दैट इज़ इट यू गाइज, दैट वॉज द प्राइमर. अभी मूव ऑन करते हैं करेक्टर की तरफ, क्योंकि आप लोग देख सकते हो मेरा थोड़ा सा डार्क सर्कल्स, थोड़ा पिगमेंटेशन है स्किन में और स्कार एंड मार्क्स भी है. तो उसके लिए जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी वो है कफ्स एंड लैशेस का कवर पॉट्स. जो शेड में यूज़ कर रही हूँ कवर पॉट से वो है नंबर 15. इट इज़ अ पीच करेक्टर एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट यू गाइज. सो लेट मी जस्ट क्विकली अप्लाई दिस. जो ब्रश में यूज़ कर रही हूँ वो है पैक का 215 ब्रश. ये अच्छे से कवर कर देता है एंड जो कवरेज है वो भी मीडियम टू हाई है. व्हेनेवर यू यूज़ अ ब्रश, it gives you high coverage. I think everybody should try this product. Also, if you're trying this out, in my recommendation, just let me know if you like this or not. आप देख सकते हो it has nicely covered up the marks. Next, for foundation मैं use करूँगी Maybelline का Fit Me foundation. So the bigger one retails for ₹500 something and this one retails for ₹299 and my shade is 310, but I have this 230 which actually also matches me, so today I'm going to use 230. But if you are in my skin tone, you can definitely go for 310. I'm using 230 because I have the smaller one and also the shade is little bit yellow tone, so let's use this. So जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे वो है सिग्मा का फ्लैट कबूकी ब्रश. दिस इज़ F80. सो फाउंडेशन तो हो गया, अभी बारी है कंसीलर का. तो ये वाला जो कंसीलर मैं यूज़ करने वाली हूँ वो थोड़ा सा ही हाईलाइट करेगा मेरे अंडर आई को. सो द कंसीलर इज़ हाफ एंड हाफ HD Pro कंसीलर. जो शेड में यूज़ कर रही हूँ वो है 04 आइवरी. थोड़ा सा ही अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा हाईलाइट चाहिए अंडर आई में. नेक्स्ट फॉर माई कॉन्टोर मैं फिर से कवर पॉट ही यूज़ करूँगी फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस. ये वाला जो शेड मैं यूज़ करूँगी कॉन्टोर के लिए वो है नंबर 12. सो अभी जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ उसको लगाने के लिए वो है Forever 52 का PX059 ब्रश एंड इट्स अ वेरी गुड ब्रश टू
apply the product. नेक्स्ट इसको ब्लेंड करने के लिए जो मैं ब्रश यूज़ करूँगी वो मेरा बहुत ही फेवरेट ब्रश है. दिस इज़ फॉरएवर 52 PX049 ब्रश. आप देख सकते हैं इट्स अ ब्यूटिफुल ब्रश. इट इज़ वेरी वेरी डेंस एंड इट ब्लेंड्स आउट द कॉन्टोर सो वेरी नाइसली. अगर आप ब्लश भी उसके साथ ब्लेंड कर सकते हैं तो यू कैन डेफिनेटली, लेकिन दिस इज़ सच अ गुड brush to blend your contour. This is my current favorite and मैं कोई भी ब्रश को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ जितना इस ब्रश को मैं करती हूँ. It just gives that very very nice, you know, natural finish. You can see it just blends really nicely. तो मैं nose contour को blend करूँगी अपने sponge की मदद से, and this is from also Cuffs and Lashes. Alright, now I'm going to set my under eyes with the help of this LA18 compact powder. इसका shade है 01 Pearl. Next, for my blush, I am using this Miss Claire blush in the shade number 39. And the brush here I'm using is PAC 306. Now to set my face, I'm using this 20 something cosmetics. This is the makeup fixer with aloe vera and vitamin E. Okay, now let's do the brows, and for my brows I'm using this in color eyebrow pencil in the shade brown. This eyebrow pencil is creamy and also pigmented at the same time, and I love the formula, you guys. I think it's a very very good eyebrow pencil, and it is also inexpensive. So I think it's a good brow day. And now I'm going to set my brows using the Wet n Wild Mega Clear Mascara. Alright, now for my highlighter, today I'm using the Stay Quirky highlighter. This is the liquid highlighter, and it has that gold particles which I absolutely love. Look at that glow, you guys. It's so beautiful. Alright you guys, now it's time for eye makeup. तो जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ आई शेडो पैलेट, वो है स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट. दिस इज़ द अल्टीमेट शेडो पैलेट इन द शेड 04. आई लव दिस. इट इज़ वेरी नाइसली पिगमेंटेड and it is affordable, so you can definitely go ahead and grab it. So first I'm taking this shade and I'm going to apply this a little bit on my crease. Next I am going to take this shade and I'm going to blend out my crease. Next I am going to take this chocolate brown shade and I'm going to apply this all over my eyelid. Now for my lower lash line, I'm going to use the same shades I applied on my crease. Next I am going to use this Swiss Beauty liquid eyeshadow in the shade 06. Now this is called Molten Midnight. I'm going to apply this all over my eyelid. Next I'm going to use the Sugar Cola of Honor Intense Kajal in the shade Brown Bag 02, and I'm going to use this on my waterline. Now I need that little bit of color on my eye, and I think it is going to look very very sexy at the same time. So I am going to use this Cuffs and Lashes Waterproof Color Pop Liner in the shade Bumble just on my inner corner.
Okay, I am going to apply another layer of this liner later, but now for mascara I'm using the Mars mascara. Now this is the first time मैं ये use करूँगी, and आपको अगर Mars का full face देखना है first impression, तो इस वीडियो को ज़रूर like कीजिए और comment भी कीजिए नीचे. So let's try this out. The wand is so big, you guys. Oh my god. Alright you guys, now जल्दी जल्दी मैं ये eye भी complete कर लेती हूँ off camera and then we'll move on to the lipstick. So this is the final eye look. Let me know what you guys think. I know it's a little too much, but it's New Year's Eve, so let your eyes do the talking and also your dance moves. Now let's move on to the lip shade, and today I'm using the Lakme Forever Matte Liquid Lipstick in the shade 08 Nude Dream. This is the final look. Let me know what you guys think about it. If you like this video, do give this video a big thumbs up, and please do subscribe to my channel, and please share this video with your friends and family. I know it was a budget friendly makeup, but I hope I did justice. And yeah, thank you guys for watching. I have another video coming up tomorrow. Till then, take care. Happy New Year in advance, and I love you all. Mwah. Bye.